Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the Q Factor. Tawheedur Rahman, 11 years of age, from London, recited Surah Al-Muzammil. Alicia Farouk, 7 years of age, from Bradford, recited Surah Al-Duha. And I can tell you, they both read really, really well, wonderfully well. Whether they go through to the next stage of the Q Factor, they will only find out towards the end of the show. Issa Pelani. MashaAllah, my judges are here with me, Mufti Abdul Muntaqim Sahib and Mullah Huzaifa. I thank them both for taking out time and for giving time to this show to be the judge, MashaAllah, on the Q Factor. Alhamdulillah. Let us go to our next caller now in this segment, and let's see who we have. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Who's calling? My name is Aniha. Aniha. Yes. Aniha from where? I'm calling from Milton Keynes. Okay, Aniha, what is your surname? Ali. Aniha Ali, mashallah. And how old are you? I'm 9 years old. Excellent. Aniha, which surah will you be reciting? Today I am going to recite Surah Waqi'ah. Okay, and why do you wish to recite Surah Waqi'ah? I chose this surah because I memorized it. Okay, so the reason you want to read this surah is because you have it memorized. Yes. Excellent. Aniha, Ali, when you are ready, please begin. Insha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. Okay, Jazakallah Aniha Ali. Chop hum hurun ain par hi stop karte hain. And all I wish to say to you, Aniha Ali, lovely piece of reading, and I've fallen in love with your melody. Beautiful melody to the reading, there can be no doubt. And there was another point I wanted to make. I think it was the Ra. On the Ra, make sure the Ra, whenever it has Fatha Dhamma on top of it or before it, it is read with a heavy sound. Otherwise, it will be read with a light sound. But overall, I loved your reading. Excellent, mashallah. Stay on the line. Don't go anywhere because I want you to take the feedback from my judges here, Maulana Huzaifa. Jazakum, absolutely, Aniha. That was beautiful recitation
of Surah Al-Waqi'ah. I enjoyed it, mashallah. And you're only 9 years of age, so really you've memorized Surah Al-Waqi'ah and you've executed very well. There are huruf madda and alif madda are not to be stretched too long. So if you say rajja, that's it, not rajja, bassa, this is too long. You do it only for 2 harakat. And I think there was one place you forgot to do idgham, but that's a small thing. But yeah, your beautiful recitation and keep it up, inshallah. जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छी तिलावत रही अल्हम्दुलिल्लाह अनीहा अली की, और सूरह वाक़िया को याद करना ये भी अच्छी बात है, खुशकिस्मती है माशाअल्लाह। तो एक बात मौलाना हुज़ैफ़ा साहब ने अच्छी बातें बता दी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मशवरा दिया। एक तो यह है मेरे जहन में एक बात आई है कि ये जो गुन्ने जितने किए हैं, गुन्ना सब गुन्नों की मिक़दार एक जैसी होनी चाहिए। एक गुन्ने में कुछ ज़्यादा लंबा गुन्ना हो और एक में दरमियाना हो या एक में निस्बतन कम हो, कभी जल्दी की वजह से ऐसा हो जाता है। इसी तरीके से मद्द असली की जो मिक़दार है उसमें भी बराबरी होनी चाहिए, और बाज़ में कमी ना आए या ज़्यादा ना हो जाए। बाज़ आयतों में यानी मद्द असली की मिक़दार बढ़ गई, लंबी हो गई, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी तिलावत है। ये जितने लोग हैं इन्होंने जो तिलावतें की हैं, ये अगर मश्क करेंगे ना, कितने बच्चे हैं इनको वो हरूफ आते नहीं, सही मखरज से अदायगी होती नहीं इनके, माशाअल्लाह बस मश्क अगर होगी और मेहनत होगी तो वो बेहतरीन रिसाइटर बन जाएंगे ये माशाअल्लाह। Jazakallah. What Aniha Mufti Sahab said, and Mawla Huzaifa, let me just tell you the gist. A consistency. So ghunna, if you do ghunna, make sure it is consistent. If you do obviously mad asli, the original natural mad, make sure there's consistency, because when you have consistency, it beautifies the overall piece of reading. Okay, Jazakallah Niha. End of the show, end of the Q Factor. You will find out whether you have made it to the next round, to the next phase of the Q Factor. Jazakumullah, Allah bless you and your family. Next call. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Sharif Mia. Yeah. Sharif, you're through. You don't need to call. Okay. So, what do I do? Just wait. You just wait, inshallah, and you will get a call from someone here from the Q Factor team, and they will tell you what you need to do. Okay. Which day? They will call you. Don't worry about it. We have Okay. you. We have you. Do you want to say anything to Mufti Sahib and Mawla Huzaifa? No. Say something to them, Sharif. What do I say? Say anything you want. Tell them to make dua for you. Okay. Make dua for me. Inshallah, inshallah, we will make Jazakallah. dua for you, inshallah. Sharif, have a good day, my friend, and I'll speak to you soon. Okay. Jazakallah. MashaAllah, Sharif Mia. He's very anxious to call into the show, and I pray for him that Allah opens the doors for him and he is able to read the Quran very, very quick and very soon, inshallah. Jazakallah, Sharif. Allah bless you and your family. Next call, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Who's calling? Hussein. Hussein, what's your surname? Nawaz. N-A-W-A-Z. Hussein Nawaz from Manchester, yeah? Yes. How old are you, Hussein? 13. 13. And you're calling from Manchester? Yes. And Hussein, which surah will you be reading? Surah Ar-Rahman. Why Surah Rahman? Because I like to read it. Because you like to read it. Cholo Pir, that was an easy answer. Okay, so Rahman, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Okay, Jazakallah, Hussein Nawaz. Let me go over to Mufti Saab पहले आप पर आप ज़रा कुछ कहें माशाअल्लाह जो शौक़ व ज़ौक़ है कुरान करीम के पढ़ने का जो एक जज्बा है शौक़ है इस पर तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया है। जो भी हिस्सा लेगा इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कुरान करीम के पढ़ने की का शौक़ है और दिलचस्पी है, तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। सबसे पहले आपकी मेहनत मखारिज पर होनी चाहिए, प्लेसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है, इस पर अलग से आप पहले मेहनत करें। अब अनाम को अनाम पढ़ेंगे तो यहाँ तो लहना जली है तकरीबन, लेकिन आप हमज़ा का तलफ़ुज़ भी कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हमज़ा की जगह पर आइन हो रहा है किसी जगह पर, तो काफ़ी यानी आप पहले मखारिज पर तवज्जुह दें, फिर उसके बाद सिफ़ात पर, तो इब्तिदा तो मखारिज ही से हो, फिर उसके बाद सिफ़ात की तरफ भी आपकी तवज्जुह हो, उसके बाद वो फिर लहन अच्छा होना, साउंड अच्छा होना, इसका मरहला फिर उसके बाद आता है। तो आप माशाल्लाह मेहनत करें, आप कामयाब हो सकते हैं। इससे कई गुना ज़्यादा ख़राब जिनके पढ़ाई है वो भी बहुत तरक्की कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सिर्फ मेहनत चाहिए, सिर्फ मेहनत की कमी है, लेकिन एबिलिटी है कि आप तलफ़ुज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। मौलाना हुज़ैफ़ा। Yeah, absolutely. I'm just going to mirror what Mufti Saab has said. A little bit of effort needed on your makharij, definitely. Makharij are a little bit all over the place. So, and even before that, what I said earlier is the words and the harakat of the Quran itself. You should read those correctly. For example, insana, there is a fatha there, but you said insanu at one place. So that's a fundamental mistake in the Quran. You've changed a fatha to a dhamma. So make sure that doesn't happen, inshallah. Yes, and what Hussein, look, I know you're trying very hard, there is no doubt, okay, and your continuation of learning Quran, working on it in a step-by-step formula will achieve where you want to go, okay? So Jazakallah for the call, and wait till the end of the show for you to find out whether you have made it through to the next round or not of the Q Factor, okay? Yeah, okay. Can my sister read? Abiha wishes to read? Okay, Yes. put her on. Abiha Nawaz. Hello, Abiha. Walaikum salam. Gee, how old are you, Abiha? 10. 10. From Manchester. And which surah will you be reading? Surah Nas. Surah? Surah Nas. Nas. Yeah. Why Surah Nas? It's my favorite surah. It's your favorite surah. Cholo, let me hear, let us hear, let us all hear Surah Nas. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, thank you so much, Abiha. Ji, Maulana Huzaifa. Just like what we said for Hussein, a
a bit more effort, inshallah, needed. For example, the قل أعوذ برب الناس, the qaf is حروف مستعلية, which is a mouthful letter. So make sure that you are pronouncing these letters. Also harakat and huruf madda, make sure that harakat you don't stretch, and huruf madda which are 2 harakat long or 2 counts long, you only stretch them for that amount, inshallah. जी. माशाल्लाह, जो भी शरीक होता है उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि शरीक तो हुआ है कोई, तो अभी हाँ ने माशाल्लाह हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन आपकी भी मश्क बिल्कुल यानी शुरू से आपने मश्क भी करनी है, मखारिज हरूफ के जो मखारिज है वो भी सीखने हैं, फिर उसके बाद सिफ़ात की तरफ तवज्जो देंगी। आपने पूरा सीखना है अभी इंशाअल्लाह, सीखना है, अभी इब्तिदा है, लेकिन शौक़ ये सबसे बुनियादी चीज़ है। किसी के दिल में मोहब्बत हो, शौक़ हो, इनकरेजमेंट हो, तो इंशाअल्लाह ताला वो आगे बढ़ सकता है। तो आपने मेहनत करनी है, उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, तो आप मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मखारिज में भी कमी है, सिफ़ात में भी कमी है, हर चीज़ में अभी कमी है, तो आपने मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। Jazakallah biha, thank you so much. Nice constructive comments from both our judges, inshallah. Make sure the effort is invested, make sure you work on all the tajweed rules, apply them, find them, identify them, digest them, apply them, okay? Jazakallah biha. You and Hussein have a good day, and towards the end of the show, surely you will find out whether you have made it to the next round of the Q Factor. Next call, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Who's calling? Al-Amin Alao. Who? Al-Amin Alao. Al-Amin. Yes. Al-Amin from where? London, southeast London. Okay, Al-Amin, what's your second name? Alao. Alao. Allow. Yes. Chalo. Alao. Alao. Gotcha. And how old are you, Al-Amin? 9 years old. And you're calling from London, are you? Yes. Excellent. And which surah is it you wish to read? Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Why Surah Ar-Rum? This is my current surah. Oh, that is the surah you're reading at this moment. Your sabak, is it? Yes. Okay, and will you be reading from the beginning? Yes, inshallah. Okay. When you're ready, you can start. Okay. أعوذ بالله من I'm just going to get off. You're doing... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, let me stop you, Al-Amin. Are you on loudspeaker? Loudspeaker. Is your phone on loudspeaker? No, it's not. Okay, bring it close to your mouth, because bring the Yes. speaker close to your mouth. It's not clear. There's too much noise in the background. We're outside. That's why we're outside. You're outside? Yeah. What are you doing outside? Okay, come inside. Come inside and inshallah start reading, because there's too much noise. If you're going to read like this, then we won't be able to judge you. So I want what's best for you. Start again, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okay, let's stop the Alameen. Alu, what did you think of your reading? It was very beautiful. It was very beautiful. Okay, well, it was very beautiful. There's no doubt. Good. I think, look, your tajweed is, yes, there are mistakes. I would not say it is absolutely clean from any tajweed mistakes. More importantly, I believe you rushed it. Don't rush your reading, especially when it's a competition. Okay? But I did like the reading. I will not say I did not. And I believe if you are guided, the fact that your tajweed is okay and you've got somewhat of a melody to your reading, as long as you are guided, you can do extremely, extremely well in the competition. So I, mashallah, enjoyed the reading. But hold on to the line. Let me hear the feedback from the judges. Mawla Huzaifa. Ji, mashallah. No, absolutely. Like he said, it was beautiful, and it could have been more beautiful if, for example, some of the rules that you unfortunately missed out. And like Maulana said, I think you're walking at the same time as reading, or there's a lot of disturbance in the line, and you really rushed it. So if you're taking part in a competition, you need to relax, sit down, and then call in so that you can read properly, and then you don't, in the midst of this rush, you don't miss out these rules, which take a bit of time to pronounce and to say it. So you need to maybe not rush and sit down and then read carefully so that all of these rules can be taken into account. But overall, the tune was beautiful, and you tried, mashallah, to read very beautifully. Jazakallah. Ji Mufti Sahab. माशाअल्लाह शरीक जो हुए उस पर मैं बहुत खुशी का इजहार करता हूँ। एक तो यह है कि अपने आप को बेहतरीन तरीक़े से वो ऑर्गेनाइज़ करें पढ़ने के लिए। ऑर्गेनाइज़ की जो कमी है उसका ज़िक्र आपकी बात में भी आया, इसका ज़िक्र आया है, मौलाना ने भी इसका बताया है कि वो ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। और फिर कभी आपने क़रात लंबी पढ़ी और कभी जल्दी में हैदर के तर्ज़ पर पढ़ना शुरू कर दिया। तो अपना एक ख़ूबसूरत स्टाइल बनाने की ज़रूरत है। हदीस में फरमाया गया है कि तुम कुरान करीम को ख़ूबसूरत तरीक़े से पढ़ो, बेहतर अंदाज में पढ़ो। अब ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस नहीं है, अपना एक स्टाइल हो, वो स्टाइल आप किसी को फॉलो करके बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन जो स्टाइल आपके लिए अपनाना मुनासिब हो, जो आसान हो और जो तजवीद के मुकम्मल तजवीद के मुताबिक हो, तजवीद के रूल रेगुलेशन के मुताबिक हो, मखारिज और सिफ़ात के मुताबिक हो, लेकिन सुनने वाले को अंदाज़ा हो कि नहीं उनका अपना एक खूबसूरत ओन स्टाइल है, तो ओन स्टाइल की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। ये ऐसा लगता है कि वो वैसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं, प्लानिंग के बग़ैर और ऑर्गेनाइजिंग के बग़ैर पढ़ते जा रहे हैं। तो इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, और कभी जल्दी कभी यानी आहिस्ता, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ हरूफ मुस्तफ़िला है या शाओ, उसमें अलिफ़ को पुर कर लिया है, तो यहाँ इसमें पुर अलिफ़ का पुर होना ये सही नहीं है। तो
सिफ़ात का भी ख्याल रखना चाहिए पूरा। बाज़ जगहों पर सिफ़ात में भी कुछ खलल हुआ है, लेकिन माशाअल्लाह आपने सूरह रूम की तिलावत की है और 9 साल सिर्फ उम्र है, तो इस लिहाज से माशाअल्लाह आपकी हिम्मत भी ज़्यादा है, लेकिन सब अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है आपके लिए। बिल्कुल, थैंक यू मुफ्ती साहब, very good feedback indeed. Al-Amin Alu, what you want to do is make sure when it comes to Quran reading, it all has its adab, its etiquettes. Follow the etiquettes, follow the adab. Make sure you're ready and prepared, because that plays a massive part in your reading. But overall, very good. End of the show, you will find out whether you've made it to the next round or not. Next call, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. What's your name? My name is Nabiha. Nabiha. मदीहा। Is it, Nabiha. spell it, is it N or M? N. N. Nadiha, yeah? M. N. N. N for November, yeah? Yeah. Okay, Nadiha. What's your surname? Huh? Islam. What is your second name? Islam. Islam. Nadiha Islam. Okay. Nabiha. Nabiha. नबी। Nabiha. Chalo theek hai. Sorry about that, because sometimes it's difficulty here from the phone. Never mind. Nabiha Islam. How old are you? 8. 8. And you are calling from where, Nabiha? London. London. Excellent. And may I ask which surah it is you will be reciting today? Surah Takasur. Surah Takasur. And why do you wish to read Surah Takasur? Because I had mistakes and then I learned from it. Okay. All right. Good. Not bad. Let me hear it. When you're ready, please start. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqamut-Takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Okay. Nabiha Islam. That was good, but you know, when you start the Quran, you are supposed to start the Quran with ta'awudh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Do you understand? Number one. You missed that out. Never mind. Other than that, you started off well. Tajweed seems to be okay in the first half of the surah. Second half of the surah, that was slacking. What I heard in the first half was slacking in the second half. Okay, but overall, I believe it's good. I don't want to say anything bad or anything negative towards you. More effort required. Of course, everyone will get the same kind of feedback. Effort required, more mehnat in the recitation, in grasping the rules of tajweed and applying them to the right harakah, right sign, right letter. Jazakallah for that call, and towards the end of the Q Factor you will find out whether you have made it to the next round or not. Ji, Mullah Zaifa. Ji, mashallah. A good try at reciting this surah. Now you said that this is a surah that you were learning, then you forgot, and then you learned or something like that. A little bit more effort. And for example, there are some of the mistakes within the surah itself, not tajweed, not your melody, but within the surah. For example, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. So you didn't read that correctly. And also some of the places that you stretch the harakat. So try avoid doing that. And inshallah, a bit more effort. But it was a good piece of recitation. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ 8 साल बच्ची हैं, नबीहा इस्लाम, तो लेकिन अच्छी तिलावत थी, आवाज़ भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। या अगर मेहनत करेंगी तो आगे बढ़ सकती हैं माशाअल्लाह, बहुत गुड रिसाइटर बन सकती हैं आप। लेकिन जैसा कि जहीम की जगह पर जहीम हो गया, तो ये लहन जली, तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये फिर मखरज में भी है, फिर
एक तो यह है कि अपना एक वही बात मैं बताऊंगा कि तजवीद के साथ खूबसूरत तरीके से पढ़ने के लिए अपना एक स्टाइल बनाएं, किसी को फॉलो करें और पूरी नकल उतारें ताकि आपका अपना एक पढ़ने का अंदाज़ बन जाए। तो इसकी तरफ तवज्जो दें और बग़ैर किसी प्लानिंग के वैसे ही पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने में जो खूबसूरती आ सकती थी वो नहीं आएगी। तो पढ़ने को अब पढ़ाई को तिलावत को आप खूबसूरत बनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि वो आवाज़ बहुत अच्छी हो, आवाज़ का बेहतर होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका ख्याल रखें। इंशाअल्लाह आपको अगर आप मेहनत करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ सकती हैं इंशाअल्लाह। Jazakallah, thank you so much, Mufti Saab and Mawlana Huzaifa, and thank you, Nabiha Islam. After the break, we will take more calls, but everyone, all 7 callers and everyone else do watch, because towards the end, I can only announce who makes it around to the next round and who unfortunately will not make it around to the next round. So stay put, please. Assalamu alaikum.